Hello everyone, very good afternoon. I hope we are set and ready to solve some questions. So today we are going to practice questions from alternating current. This topic, when it comes to question, will really feel so easy. So let's do some really doable question, easily doable questions. So let's start with this. This came in 2024. First you read the question, then I will tell you what you need to calculate. Okay? First read it. Yes, everyone gone through question? So basically what you need to calculate is value of I1 in ampere, I2 and omega naught and V naught. Okay. So I1, I2 you already know. So we need to calculate what things I1, I2, omega naught and this is V naught. These four things we need to calculate. Okay. What will be the value of I1? These are the options 0, 2, 4, 20, 200. Okay. 0, 2, 20, 400 or something, right? These are the options 0, 2, 4, 20, 200. 4 is also there. So basically, out of this, we have to select values of I1, I2, omega naught, V naught.
चलो ठीक है। सो क्वेश्चन इज लाइक, सबसे पहले देखो, व्हेन एट t इक्वल टू एट एन इंस्टेंट इनिशियली K1 K2 दोनों ही ओपन है, सो देर इज नो सर्किट एग्जिस्टिंग एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि दोनों ही की ओपन है, वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लोज सर्किट। डन है। What happens at an instant K1 is getting closed, so you are closing K1, and the moment you are closing K1 हमारे पास सर्किट कैसा है, ऐसा। and this is what sort of circuit, if you remember, this is what LR circuit, LR DC circuit, right? So this is LR circuit, और LR circuit में आपने क्या पढ़ा है, if you remember? Yes, LR circuit पढ़ा है ना, rise of current, fall of current in LR circuit. What it will look like, देखो, both for capacitor and for inductor we have learned LR and RC circuit for this sort of battery, DC battery, right? So let's say here this is capacitor, then there is resistor, then there is this battery. So we have to read these two circuits. यहाँ पे voltage V ले लो, let's say this is R, this is L, let's say here this is V, this is R, this is C. So we already know for capacitor that initially at t equal to 0 time, when this circuit is completed, then capacitor initially behaves as what? Initially it behaves as conductor. Okay? And you must have solved question where capacitor is there in the circuit, and in a steady state you are getting asked what will be the current. So in steady state, that is after long time, we tell that capacitor will behave like what? Capacitor will behave like uh what? Insulator. Done it. And why it will behave like insulator? क्योंकि तुम्हें पता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। कैपेसिटर्स का रेजिस्टेंस 1/ओमेगा c होता है, ठीक है। यहाँ पे जब तक चार्ज मैक्सिमम नहीं हुआ है कैपेसिटर पे, चार्ज इज ऑक्सीलेटिंग, राइट? सो इट इज नॉट हैविंग कांस्टेंट चार्ज वैल्यू, एंड हेंस अक्रॉस इट पोटेंशियल इज चेंजिंग। बट व्हेन देयर विल बी मैक्सिमम चार्ज ऑन इट ऑलरेडी, अगर इसमें मैक्सिमम चार्ज आ गया है, then there is no oscillation of charge, right? There is no charge variation. Omega will, we will take as 0, and here I mean what, resistance is becoming infinity. ठीक है। so in steady state always remember, in LR और RC circuit, RC circuit की अगर आप बात करो तो in steady state, स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, डोंट माइंड इट। इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर। And initially at time t equal to 0 it will behave as what? It will behave as conductor. ठीक है। सो इन स्टेडी स्टेट कहने का मतलब एट टाइम t टेंड्स टू infinity, that is after long time. And when you talk about LR circuit, then in that case when t tends to infinity, then it will behave as what? L will behave as a conductor, just the opposite of what? Just the opposite of capacitor. And at time t equal to 0, that is initially the moment you are connecting L and R with the battery, at that point L will behave as insulator. ठीक है, ऐसा बस याद रखो इस चीज को भी। तो इट इज लाइक दिस। डन है। नाउ लेट्स यूज दिस थिंग हियर। द मोमेंट यू आर क्लोजिंग द स्विच K1, जैसे ही आपने स्विच K1 को क्लोज कर दिया, वी आर गेटिंग LR सर्किट, है ना? दिस, देयर इज L this and R this. Still capacitor is not in the circuit because K2 is open, so we are getting LR circuit. And in that case, current flowing through the R node is found to be I1. So at t equal to 0, in LR circuit, L will behave as what? Insulator. So it will show infinite amount of what? Resistance. And if it is showing infinite amount of resistance, circuit will look like what? Circuit will look like this. Inductor की जगह पे break हो जाएगा. Then there is this R naught, and then there is this battery like this. So at t equal to 0, if you're closing the switch K1, you circuit will look like this. No current, right? There is break in the circuit. So initially current will be what? 0, and hence I1 you will write as what? I1 will be 0. So I1 के लिए आप क्या लिखोगे? I1 is 0. Now what is this I2? Let's talk about that. After a long time, the current attains the steady state value I2. After long time.
So after long time, what is happening? Still, we are not talking about switch K2. Still K1 is closed and long time has happened. So after long time, that is in a steady state, L will behave as what? It will behave as a conductor. So it will show no resistance. And in that case, your circuit will look like what? I mean, after long time, T tends to infinity पे यही circuit कैसा दिखने वाला है? ऐसा. So this is V, this is R naught. It will look like this. So I2 का value क्या लिखोगे आप? V by R naught. So V is given 20 and this is 5. So 20 by 5. आप simple ऐसे लिख डालो 20 by 5. This is your 4 ampere. So I2 value will be how much? It will be 4 ampere. Now the question is, thereafter, after a steady state has reached across the inductor, यानी कि maximum magnetic energy, that is half Li naught का square, has been stored on the inductor. And then what we are doing, K1 ko we are disconnecting and we are connecting it with what? K2. K2, we are opening K1, we are closing K2, right? Thereafter, K2 is closed and simultaneously K1 is opened. So no longer these things are connected to the battery. Now a charged inductor is charged here. A charged inductor is connected to a capacitor. This thing is happening, okay? And and the voltage across V naught oscillates with amplitude V naught and angular frequency omega naught. Okay? So in second case, what is happening? Let's talk about this second case. So in second case, capacitor, ऐसा, no charge was there on the capacitor. We are connecting it with inductor, which is having maximum energy stored in it. Okay? Because it was initially connected to a battery for a long time. So it has maximum energy stored in it. Now this is becoming LC circuit. और अगर तुम लोगों को याद हो तो एलसीआर सर्किट में हम लोग पावर कैसे लिखते हैं? वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi हम लिखते हैं ना, ऐसे पावर लिखते हैं. Cos phi is what? It is the power factor. This is what? This is basically your angle between what? Current, I mean, cos phi is what? You indicate it like this. Along this is R. Along this is XC minus XL. And then this is the resultant. And whatever angle this is making with this is your angle phi. Okay? So here there is no here I mean यहाँ से अगर आप tan phi लिखते हो तो tan phi if you talk about simply inductor in the series in the circuit, suppose कर लो सिर्फ inductor है हमारे circuit में, AC circuit में. Let's talk about this. So if there is just inductor, tan phi का value आप क्या निकालोगे? You will write it like XL by 0 क्योंकि R is not there. So in that case this is what? Phi is becoming 90 degree. यानी कि cos phi will become what? 0. Done it. So we have learned in AC chapters that power consumed across inductor is 0. Also cross capacitor is 0. Power only get consumed across the resistor, right? That we have studied. So here if you look at this, some energy it has stored, magnetic energy. It has some energy. And then there is this capacitor. There is no resistor in the circuit. And since there is no resistor in the circuit, this circuit will remain what? Energy in this circuit will remain conserved. Energy क्या होने वाला है? Conserved, क्योंकि power loss हो नहीं रहा. So energy you will say what? Conserved. And that is why we have learned already a circuit with inductor and capacitor with either one of these completely charged initially will perform LC oscillation. Have you read LC oscillation? Anybody? Yes, ma'am. हाँ पढ़ा है ना, तो फिर तो इजी है. अब तुम्हें एलसी सर्किट का ओमेगा निकालना था और मैक्सिमम वोल्टेज निकालना था. ओमेगा कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैं ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट एलसी होता है. और ये कहाँ से आ रहा है? एनर्जी कंजर्व्ड है. किसी भी टी टाइम पे सपोज कर लो करंट आई है सर्किट का और इस पे चार्ज क्यू है. तो टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा. You differentiate it with respect to time, then you will get omega is equal to this. You will get a equation where charge will feel like it is oscillating. जैसे यहाँ से ऐसे देख लो 2q by 2c dq by dt plus half L
2i di/dt. ठीक है, this is equal to 0. If you solve it, you are going to get what? Q by C this is. ठीक है, so this is your Q into dq by dt is what? I. So Qi by C plus this is how much? Li di/dt is equal to 0. I को आप कैंसिल कर डालो. ठीक है, कैंसिल हो जाएगा. di/dt which can be written as d2q by dt square, and this is equal to minus q by lc. ठीक है, this is same equation as we get in terms of displacement in SHM. है ना, SHM का equation आप कैसे लिखते हो? You write it like d2x by dt square is equal to minus omega square x. So there SHM was happening where x was changing with time, right? And here also SHM is happening, oscillation is happening. And here what is oscillating? Not displacement, charge is oscillating. So omega का value क्या है तुम्हारा? 1/√LC. You can simply put the value and you can get the answer. क्योंकि L is given, C is given. You can get the answer. And then we need to calculate V naught. How we will calculate V naught? So again, use the energy conservation. Energy conservation आप use कर लो. जैसे initially, what is the amount of energy stored on the, I mean, oscillation जब होता है ना, what will happen? Let's get that done. So initially, all energy is there in the inductor. ठीक है, with time what will happen? Capacitor is getting charged. There will be a time when this will have maximum charge and there won't be any current flowing through the inductor, and hence there won't be any magnetic energy stored. All energy will become electrical, but total energy has to be conserved. So at that point, electrical energy here, that is maximum charge that we are getting here by 2c, will be equal to how much? It will be equal to En. और maximum stored energy half CV naught square. V naught निकालना है ना हमें. We have to calculate V naught. So you will write half CV naught square is equal to initial magnetic energy half L I naught का square. So I naught हमें पता है ना, इस सर्किट में करंट कितना था बताओ? Maximum current that we got was 4, right, in steady state. So यहाँ पे आप लिख डालो half L का वैल्यू क्या है? L is your 25/1000 हेनरी. I naught का स्क्वायर 16 आप लिख डालो, हाफ इंटू C का वैल्यू क्या है बताओ? C का वैल्यू है 10⁻⁻5 into V naught का स्क्वायर. You can calculate V naught now. So you will do this calculation, right? So V naught का वैल्यू you will get. तो यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था. क्वेश्चन क्या था? You just needed to have the formula. You just needed to have a concept of कि LR सर्किट में क्या होता है, RC सर्किट का तो यूज नहीं हुआ. बेसिकली टू सर्किट, LR सर्किट एंड LC सर्किट. तो LC सर्किट जहां भी होगा, with either one of the charged initially oscillation होगा, charge will oscillate. ठीक है, एंड उस ऑक्सीलेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सिंस दिस इज ऑक्सीलेटिंग, इट्स एनर्जी इज कंजर्व. है ना, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन ही नॉर्मल ऑक्सीलेशन है, एनर्जी विल बी कंजर्व. फ्रॉम देयर वी विल गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन 1/√LC. एनर्जी विल कीप ऑन ऑक्सीलेटिंग बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ठीक है, किसी भी टाइम पे जैसे तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसा टाइम बताओ जब इंडक्टर और कैपेसिटर पे एनर्जी इक्वल है. हाउ यू विल डू सच क्वेश्चन? मैम टाइम पीरियड का हाफ कर देंगे. आर यू श्योर? हम यही हाफ करना चाहेंगे सर. हाफ टाइम टाइम पे पीरियड मतलब ओमेगा, मतलब पता है ना 1/LC, उससे निकल जाएगा. तुम लोगों ने एलसी सर्किट अगर ध्यान से पढ़ा है तो इनिशियली यहाँ पे करंट मैक्सिमम है ना. सो करंट के लिए अगर आप इक्वेशन, करंट और चार्ज का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं ना, तो इनिशियली आई को मुझे, सिंस ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन है ना, साइन और कॉस के टर्म में मैं लिखने वाली हूँ. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैन राइट. क्यों? क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 आई इज मैक्सिमम, राइट. सो कॉस का फंक्शन लेना पड़ेगा, आई इज दिस. तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा? कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा. it will look like this. And if you calculate charge, then you will do dq by dt here, I naught cos omega t. And if you are going to calculate it, q का वैल्यू क्या आने वाला है बताओ? q हो जाएगा हाउ मच?
साइन ओमेगा टी सिंपल है ना. सो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट का वैल्यू अगेन यू कैन कैलकुलेट, आई नॉट बाई ओमेगा होगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी. सो दिस इज हैविंग अ ग्राफ ऑफ साइन. तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है. एम आई करेक्ट राइट? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है ना. सो या दिस इज दिस. अब आप देख लो, कब जब भी आई मैक्सिमम होगा, यहाँ पे देखो आई जब मैक्सिमम है, क्यू तुम्हारा क्या है? जीरो है. अब आप 1/4 टाइम पीरियड की बात करो, यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? करंट क्या हो गया? जीरो. यानी कि आई हुआ जीरो, और चार्ज क्या हो गया? मैक्सिमम. यानी कि 1/4 टाइम पीरियड में whatever energy was inside inductor will get stored on the capacitor. So not in half time period. Every After every t by 4 time, this energy will keep on oscillating between inductor and capacitor. ठीक है? So that thing will happen, not t by 2. है ना? ओके मैम, गॉट इट। ओके ठीक है, गलती चलो. कर दी थी मैंने। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं. सो पहले क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या करना है, अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो एलसी ऑक्सीलेशन का नोट्स एक बार चेक कर लेना. और आरसी सर्किट और एलआर सर्किट, दोनों का डीसी सर्किट एक बार पढ़ लेना. ठीक है? सो दैट इज योर टारगेट. फर्स्ट क्वेश्चन से एलसी ऑक्सीलेशन देख लेना एक बार. मैंने ये बोला आरसी सर्किट. कौन सा आरसी सर्किट? डीसी वाला आरसी सर्किट आई एम टेलिंग. एंड डीसी वाला एलआर सर्किट. यानी कि जो राइज ऑफ चार्ज, राइज ऑफ करंट का जो फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻⁻t/-t दैट थिंग. चलो. Okay, read the question. Try letting me know. This question came in 2023. Read it and do it.
ओके, प्रगति, आई एम गेटिंग यू. ओके, लेट मी चेक एंड टेल यू. ठीक है. P का this, Q का this. Yes, that is correct. Go ahead. Everyone take your time properly. ठीक है, सारी चीजों को लिखो और सही से सॉल्व करो. Yes. So if you have calculated current and quality factor, you can easily calculate bandwidth, right? Bandwidth क्या होता है तुम्हारा? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, आई मीन क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला तुमने लिखा है ना, आई मीन एक तो तुम उसको जैसे क्वालिटी फैक्टर क्या लिखते हो, ओमेगा नॉट एल बाई आर लिखते हो ना, लाइक दैट वी कैन राइट. डन है. And omega naught L by R, you can write it, or you can write it as what? You can write it like omega naught by 2 delta omega. That is, this is your bandwidth, right? Sorry, this delta omega is your bandwidth. Sorry, this 2 delta omega is the bandwidth. So basically, मैम आई थिंक टू इज नॉट देयर, दो नहीं yeah, होता Q is शायद. there. So Q also you need to calculate. अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं गिवन है, यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल विद दिस. ओमेगा नॉट इज गिवन और नॉट? इट्स नॉट, इट्स गिवन, राइट? Resonant angular frequency is given, yes, so that is given. L is given, right? R is not given. R we need to calculate. So can we calculate R? Because if you have calculated I naught, it means you have calculated R. यस मैम, कर सकते हैं. वहां से सी निकल जाएगा और फिर दे रखा है. हाँ. 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 कैलकुलेशन में पता नहीं क्या मिस्टेक हो रहा है, वन सीरी में आ रहा कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? है. Okay, let's check with this. Let's check with this. So question क्या कह रहा है? Question simple है. There is just all plays of calculation. So ध्यान से देख लो. LCR circuit है. It is connected to 45 sin omega 2 volt source. So let's draw the circuit here. So हमारा circuit L है, R है, L है, C है. LCR circuit है. This is connected to a voltage source, and this you can, I mean, current will be coming out of here like this. It will go like this. Voltage is given as 45 sin omega t. ठीक है. So basically V naught is how much? 45. And if we have to calculate I naught, that is maximum current. When we get maximum current, we get maximum current when XC and XL they are equal. And when they are equal, impedance, that is Z को क्या लिखते हो आप? इसको लिखते हो ना R square plus XC minus XL का square.
देन सो बेसिकली करंट को मैक्सिमाइज करना है। आई एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को आप कैसे लिखते हो? इसको लिखते हो ना वी नॉट बाई जेड। जेड इज दिस राइट, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वेयर। सो व्हेन दिस करंट विल बी मैक्सिमम, व्हेन दिस जेड इज मिनिमम, तो फॉर दैट एक्स सी और एक्सएल को हम क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस राइट। so maximum current is equal to how much? V naught by R. Sorry, R. And V naught is given, that is 45. R is not given. Now the task is to calculate basically R. अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ और दिया है क्या? Okay, and current amplitude at resonance is I naught. I naught will be definitely how much? V naught by R. R is missing. When the angular frequency of source is this much, the current amplitude in the circuit is this much. ठीक है? जब तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू दिस वन है 8 इंटू 10 to the power 4, current amplitude in the circuit is 0.05 I naught. So can we use this to calculate R or something? Let's try it. एक काम करते हैं, देखो मैक्सिमम करंट को हम कैसे लिखते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को क्या लिखते हैं? अभी अभी हमने लिखा था, दैट इज वी नॉट बाई जेड. So here I is equal to 0.05 I naught, and this will be equal to V naught. That is your how much? That will be 45. And this divided by Z. Z को लिखते हैं, R तो सेम रह रहा है ना, ओमेगा चेंज हो रहा है, यानी कि XC और XL चेंज होगा, प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. ठीक है? नाउ लेट्स डू समथिंग. क्या कर सकते हैं बताओ? XC और XL को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे अगर आप ध्यान से देखो, एक्सेल को क्या लिखते हो? आप एक्सेल को लिखते हो ना ओमेगा एल, है ना? एंड दिस थिंग एक्सेल नॉड, आई मीन वैल्यू ऑफ एक्सेल at the time of what? Value of XL in resonance, at resonance time, it will be equal to how much? Omega naught L. ठीक है? So this omega can be written in terms of omega naught. This is 8 into 10 to the power 4. So omega और omega naught का रिलेशन आप एक बार चेक करो. ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू 10 to the power 4. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 to the power 5 हो जाएगा ऊपर, एंड दिस विल बिकम 0.8 इंटू 10 to the power 5, दैट इज ओमेगा नॉट. व्हाई आई एम डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस सो दैट वी कैन इक्वेट एक्सी, आई मीन एक्सी और एक्सएल को सिर्फ एक वैल्यू में लाने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट गिवन सी. वी आर नॉट गिवन सी राइट. अगर हमें सी दिया होता तो सिंपली ओमेगा का वैल्यू जो भी दिया है 8 इंटू 10 to the power 4, उसको मैं यहाँ पे लिखती और आई वुड हैव कैलकुलेटेड, बट इट्स नॉट गिवन हियर. इसलिए मैं ये कर रही हूँ. 0.8 ओमेगा नॉट आप लिख लो. अब आप देखो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो इसको भूल जाओ, एक्सेल को लिखो. एक्सेल ओमेगा एल, ओमेगा इज हाउ मच? 0.8 ओमेगा नॉट, एंड दिस इज एल. सो 0.8 एक्सेल नॉट राइट. सिमिलरली यहाँ पे आप लिख डालो दिस डिवाइडेड बाई आर का स्क्वेयर, एंड दिस इज हाउ मच? एक्सी को हमने एक्सी को तो अभी नहीं लिखा हमने, ठीक है. एक्सेल को क्या लिख रहे हैं? 0.8 एक्सेल नॉट. सो दिस इज 0.8 एक्सएल नॉट. एंड एक्सी को क्या लिखने वाले हो आप? 1/ओमेगा सी. सो 1/ओमेगा आप लिखो, 1/ओमेगा. So 1/0.8 omega naught c, and 1/omega naught c is what? Xc naught. So here it will become Xc naught by 0.8. इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ऐसा जाएगा, यानी कि 5/4 Xc naught. So यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ? 5/4 Xc naught. ठीक है? So let's do this here. Sorry. लेट्स डू इट. 5/8 4 है ना, 5/4 एक्सी नॉट. अब देखो एक्सी नॉट और एक्सएल नॉट क्या है? इक्वल है. इसको मैं बाहर इधर लिखती हूँ, ज्यादा क्लियरली दिखेगा. सो 0.05 आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? वी नॉट बाई आर. दिस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर का स्क्वेयर, प्लस क्या लिखोगे? समथिंग 0 पॉइंट क्या आया था? 5/4. 5/4 एक्सी नॉट को एक्सएल नॉट में लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सएल नॉट माइनस 0. सॉरी क्या था?
यस 0.8 एक्सएल नॉट। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर सकते हो तुम। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्सएल नॉट का टर्म हमें पता है। सो पॉइंट वी नॉट विल गेट कैंसिल्ड एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 0.5 बाई आर एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एक्सएल नॉट का वैल्यू क्या होगा बताओ? प्रीवियस केस से आप निकाल सकते हो। एक्सएल एल वैल्यू इज 50 मिली हेनरी, ओमेगा नॉट इज 10 टू द पावर 5। तो एक्स एल, 4000। हाँ 10 टू द पावर 5 इंटू कितना बोल रहे हो? 50 into 10 to the power minus 3, that is your 5 into 10 to the power 3, right? This is this, if I'm not wrong. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे ना, देर इज ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज योर आर। सो यू विल बी एबल टू गेट व्हाट? यू विल बी एबल टू गेट आर, r square plus this is 5 into 10 to the power 3. This is 5 by 4 minus 0.8. So from here we can calculate r. And if we know r, we know what? We know I naught. What is quality factor of the circuit? Quality factor is your omega naught L by r. If you know r, again we can write it. The bandwidth of the circuit. Again, quality factor को bandwidth के term में भी लिखते हैं. That is omega naught by bandwidth. Bandwidth को generally 2 delta omega से मैं indicate करती हूँ. So this 2 delta omega is what? This is the bandwidth. You can write it. Peak power dissipated at resonance in what? So maximum power dissipated will be when power dissipation occurs across branch of what? Across the branch of resistor itself. And across resistor power will be maximum when there will be maximum current. So basically this is nothing but I naught square R. और अगर आई नॉट का स्क्वायर नहीं करना है तो वी नॉट स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट इट, राइट? ठीक है, ओनली दिस वाज द मॉडिफिकेशन यू नीडेड टू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आर। सो आई होप इट इज क्लियर, आई होप यू कैन डू इट नाउ, है ना? सो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, आई वुड से। आर निकाल लोगे ना, यू आर एबल टू आंसर देन होल द क्वेश्चन। कैलकुलेशन वाइज भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ आर निकालना है। सो ओनली मेहनत दैट यू हैव टू डू इज in calculating r. Once r is okay, every option is there, right? Chalo, now let's do this question. This is the easiest one. It came in after 2020 itself. I don't remember the year. So this is the simplest question that you can get. ठीक है, do it. Okay, I got one answer. सोहेल, एक बार और ध्यान से देखो, सर्किट बनाओ, चेक करो ओमेगा चेंज होने से क्या होगा। So this question is, you just need to check. There is a AC voltage source of variable angular frequency omega. ठीक है, प्रगति या आयुष, yes.
So you just construct the circuit. Yes, that's correct. So आप एक बैटरी ले लो, वेरिएबल है, and that is getting connected with what? There is capacitance, so there is, sorry, capacitor, and then there is a bulb like this, and this is connected to this. ठीक है? What we are doing, we are changing the frequency, that is omega we are changing, right? When omega is increased, then what will happen? I mean, when bulb will glow brighter, and when it will glow dimmer. I mean, it will be brighter when more amount of current is in the circuit. It will go dimmer if less amount of current is through the circuit, right? क्योंकि power getting consumed by the bulb will be I square into R. R is the resistance of the bulb, right? And current का value अभी अभी हमने लिखा था, voltage का maxima, that is V naught divided by, I mean, current, maximum value of current I'm checking with. Maximum value of current can be what? It can be like this. So check it. Yes, go ahead. So निकालो आप XC का स्क्वायर, यानी कि 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. What is going to get affected with omega? This XC thing, right? So as omega is increasing, XC will decrease. And if XC will decrease, जैसे ओमेगा को तुमने किया इंक्रीज, एक्सी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, बिकॉज एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, राइट? सो अच्छा, सो देर इज नो इंडक्टर, है ना? So omega xc is decreasing. Overall, if resistance is decreasing, so if Z is decreasing, current will increase, and if current is increasing, bulb will glow brighter. So correct option should be B. ठीक है? चलो, let's do this question again. LC oscillation का question है. Let's do it. It came in some 2015 or 12, I guess. But there are less number of questions coming in alternating current, but whatever question is there, that is easily doable if you remember all the concepts and formulas. So it's important you attempt question if it is coming from this portion. Okay? Chalo, do it, let me know. Harsita, is it happening? Yes, ma'am, trying. ठीक है, ठीक है. स्ट्रेस मत लो, ट्राई करो फिर, ठीक है? चाप नहीं लेना यार, तुम लोग इतना स्ट्रेस डिजर्व नहीं करते. तो इंडिया में स्टूडेंट की हालत खराब है, इतना पढ़ना पड़ता है फिर भी जाके कुछ नहीं मिलता. तो you don't deserve such sort of stress. Chill करो. लोगों का मेहनत बता रहा है तुम लोग बेटर पोजीशन पे होगे. आज नहीं, कल नहीं, एक साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, बट अल्टीमेटली यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, आई नो. ओके, सो लेट्स चेक मी. इट डजंट फील लाइक करेक्ट. देखो, एलसी ऑक्सीलेशन को तुम लोग क्लियर रखो प्लीज. मैम करंट में तो साइन कॉस ओमेगा टी होता है ना? हाँ, करंट का ग्राफ देखा ना तुमने, उस केस तो में यहाँ बनाया. तो साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो गलत होना चाहिए ना डी वाला तो. बाबा, उस केस में क्या किया था हमने, वहां पे तुम्हारा इनिशियली मैग्नेटिक एनर्जी वाज मैक्सिमम, है ना? तो मैग्नेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम था, इसलिए मैंने करंट के फॉर्मूला को लिया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, सॉरी, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि इनिशियली करंट वाज मैक्सिमम. लेकिन अगर एलसी सर्किट ऐसा हो जिसमें पहले कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो, देन एलसी ऑक्सीलेशन होता कब है? लेट मी क्लैरिफाई इट. एलसी ऑक्सीलेशन तब होता है if two cases, either you have a capacitor which is fully charged, ठीक है, and then this fully charged capacitor you are connecting to an inductor which is not charged, ठीक है, LC oscillation will occur. And in this case, initially at t equal to 0, current through inductor is 0,
एंड करंट थ्रू सॉरी चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे Q का वैल्यू हो जाएगा Q नॉट कॉस ओमेगा टी। समझ रहे हो? लेकिन अगर केस ऐसा हो कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है विच इज नॉट चार्ज, यू हैव एन इंडक्टर फुल्ली चार्ज, stored magnetic energy maximum connected. Now what will occur? Through this maximum energy is stored in the inductor. So it has maximum energy stored half L I naught ka square. Over time this I naught will decrease. So initially I naught is I is I naught. So here I will write I is equal to I naught cos omega t. In both the cases, go on for calculating current. Here current you will be getting as minus Q naught omega sin omega t. And here charge you will get at I नॉट, सॉरी नहीं, चार्ज के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे. सो हियर यू विल राइट dq by dt is equal to I naught cos omega t. If you're going to do this, q will be equal to I naught by omega, I guess. Yes, sin omega t. तो ठीक है थिंग्स मैम। थिंग्स चेंजेस ना इनिशियल, जैसे तुम एनसीईआरटी अगर बुक पढ़े हो तो दिस इज द केस वन। लेकिन हमने जो क्वेश्चन पहला सॉल्व किया था ना, वहां पे इंडक्टर वाज फुली चार्ज इनिशियली। ठीक है, चलो करो मैम बता। बट एक डाउट आ रहा है। मैम हम्म। पिछले वाले पेज दिखाइए एक बार। ओके, ये जस्ट प्रीवियस, हाँ ये वाले मैम। मैम इनिशियली तो इंडक्टर मतलब इंडक्ट, ओके ओके ठीक है। बैटरी से कनेक्ट नहीं है ना, ठीक है। मुझे लगा मैम, मैं सोच रहा था कि बैटरी से कनेक्ट होता है तो इंडक्टर के अंदर करंट इनिशियली जीरो होता है ना, तो साइन का फंक्शन आना चाहिए। लेकिन अभी पता चला कि चार्ज पहले से हो गया है। यस, यस, हाँ दैट इज ठीक द है ठीक। एनर्जी थिंग। हाँ, ठीक है, चलो। अब तो हो ही गया मैम, डी होगा ना मैम। यस, they will be the answer, right? So there is a capacitor of capacitance C that can be charged by a voltage source V, closing switch S1. You're closing S1, right? S2 को open रखा, so capacitor will get charged. The capacitor can be connected in series with an inductor L by closing with S2 and opening S1. We are opening S1, right? So we are not getting L and C in parallel combination. Rather, this is a purely LC circuit where initially which is charged, capacitor is charged with Q naught. सो एट चलो सारे ऑप्शंस को देखते हैं. टी इक्वल टू जीरो, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. नो, बिकॉज इनिशियली द ऑल एनर्जी इज ऑन द कैपेसिटर बिकॉज दिस इज चार्ज. This has no current. I mean, this didn't get charged with the help of battery, right? So all energy is electrical energy, not magnetic. This is incorrect. At any time t greater than zero, current in the circuit is in the same direction. No, करंट सेम डायरेक्शन में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है यहाँ पे चार्ज और करंट दोनों ऑक्सीलेट कर रहा है. सो साइन और कॉस का कर्व बनेगा. एंड हियर फॉर हाफ पार्ट इट इज पॉजिटिव, फॉर अनदर हाफ पार्ट इट इज नेगेटिव. सो डेफिनेटली डायरेक्शन इज चेंजिंग. बी कैनॉट बी करेक्ट. At t greater than zero, there is no exchange of energy between inductor and capacitor. Exchange is happening, right? Energy is oscillating between क्यू नॉट बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर. अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एनर्जी ऑक्सीलेशन का एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इफ चार्ज का ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो यस, यू नीड टू आंसर दिस. तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट विल बी दिस. हाउ दिस? करंट को क्या लिखोगे आप? चार्ज को मैंने क्या लिखा? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. कॉस इसलिए लिखा क्योंकि इनिशियली मैक्सिमम है. क्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा? ये सर्किट कनेक्टेड था, सो क्यू मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी सीवी. सो क्यू नॉट को आप सीवी लिख लो. दिस इज कॉस ओमेगा टी. यू नीड टू कैलकुलेट करंट. यू विल डू dq by dt. So you will do this, and if you are going to do this, current will be equal to cv omega. ठीक है, cv omega and this is sin omega t. And omega का वैल्यू क्या होता है? दिस इज एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट. ओमेगा इज 1/√LC. ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू आप ये रख डालो.
आंसर क्या हो जाएगा, V रूट अंडर C/L sin omega t. So current value will be this one. Yes. I asked something. I asked that हमें पता है चार्ज और करंट कितने फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है, ओमेगा से. माय क्वेश्चन इज विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज ऑक्सीलेटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी. सिंपल है, लिख डालो आप एनर्जी का वैल्यू. एनर्जी क्या लिखोगे, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर. आई का वैल्यू हमने क्या लिखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो दिस विल बिकम आई नॉट sin square omega t, right? And this is magnetic energy. What is electrical energy here? Half c v square और q square by tc. q square क्या लिखोगे, q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t 2c. बेसिकली चार्ज जो है, चार्ज या करंट, इट इज साइन और कॉस फंक्शन. एनर्जी इज साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फंक्शन. स्क्वायर सिर्फ साइन से मैं चलती हूँ, चलो. तो लेट्स टॉक अबाउट करंट. इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है. इट्स टाइम पीरियड इज हाउ मच, दिस, राइट. एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई बाई ओमेगा. सो ओमेगा इज हाउ मच, 2 पाई बाई टी. इस टर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में. सो हियर इफ यू राइट द मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है. सो इट्स वन टाइम पीरियड इज दिस, है ना. सो हियर टी डैश इज इक्वल टू हाउ मच, T/2. T/2 है ना. एंड इफ दिस इज T/2, ओमेगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल. ठीक है. सो दिस मे गेट अस, एनर्जी ऑक्सीलेट कर रहा है डबल फ्रीक्वेंसी. मैम ये तो ऑसिलेशन की तरह ही हो गया, जैसे उसमें हाँ होता है सिंपल, काइनेटिक वैसे एनर्जी ही वाला होता है. और पोटेंशियल हाँ एनर्जी वाला. वैसे ही होता है, सारी चीजें वैसे ही है. ओनली एक्स की जगह तुम्हारा यहाँ पे क्यू है. ओनली डिफरेंस इज दैट. यस मैम. ठीक है. जैसे तुमने पढ़ा होगा ना, एनालॉग पढ़ा होगा, जैसे हमने जो एसएचएम पढ़ा है, d2x/dt² इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, अगर तुम लोगों को याद हो तो, क्या था, k/m था, राइट. एंड दिस इज एक्स. इस केस में फर्स्ट क्वेश्चन को याद करो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, d2q/dt² इज इक्वल टू -1/LC/Q. So basically, if you compare, x is getting replaced by q, and mass is getting replaced by L. सॉरी, रूट नहीं लेना था मुझे यहाँ, गलत लिख रही हूँ मैं. ठीक है. सो L के मास की जगह क्या है तुम्हारा, L, है ना. सर्किट में L एक्ट एज एनालॉग ऑफ इनर्शिया, राइट. सो दिस इज इंडक्टर. C तुम्हारा 1/C इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ व्हाट, K इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 1/C. इट इज लाइक दिस. सो सेम एसएचएम हो रहा है, दोनों ही एसएचएम का इक्वेशन है. नाउ लेट्स डू दिस. अगेन दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन. डन है. इसको थोड़ा जल्दी करो तुम लोग, सो दैट आई कैन डिस्कस वन मोर क्वेश्चन जहां पे तुम्हारा सीरीज में कॉम्बिनेशन तो हमने एलसीआर का पढ़ा है, अगर पैरेलल में तुम लोगों ने नहीं किया है तो दैट आई विल हेल्प यू डू. ठीक है. सो अच्छा, इसका डायग्राम कहाँ गया, मैंने नहीं लिखा क्या. ओके, आई डिड अ मिस्टेक. एक काम करती हूँ, रुको. Okay, I missed on the diagram. I need to search it. What was the diagram? अच्छा ठीक है, एलसी सर्किट ही दिख रहा है ना. एलसी, एल इंडक्टर ले लो आप. यहाँ पे तुम्हारा सी है. दिस इज लाइक दिस. टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट. एंड देन यू आर आस्क्ड फॉर टी ग्रेटर देन 0 क्या होगा. ठीक है. तो या नाउ यू कैन आंसर दिस. लेट्स से दिस इज एल, दिस इज सी. डन है. अभी जो पढ़ा है सिंपली उसको रिप्लेस कर दो. Let me check the diagram, ठीक है. You let me know the answer. For this one, you can solve using this diagram.
Oh, okay. How many of you are not able to see the shared screen? Anyone? Harshita? Yes, it looks correct. Everyone is able to see the shared screen. Dave, I feel like you should rejoin. Then maybe you will be able to see. Okay, now you can see. Okay. There must be network issue something. Yes, everyone with the answer. Q क्या होगा? टाइम के साथ Q कैसे वेरी करेगा? Q इज इक्वल टू वॉट? Q नॉट cos omega t you will write. Done है. And I के टर्म में दिया हुआ है प्रगति. Yes. If the total charge stored in the LC circuit is Q naught, then for t greater than equal to 0. So initially it has Q naught charge, and if initially it has Q naught charge, Q का equation क्या होगा? Q naught cos omega t. There won't be pi by 2 का factor, so ये दोनों तो गलत हो गया. उसके बाद है Q और I का relation. d2Q by dt is what? I, and this is what? Q. So if Q is this, I का value क्या हो जाएगा? Q naught omega साइन ओमेगा टी. सो क्यू को इससे रिलेट कर दो. ओमेगा को क्या लिखोगे? ओके, यू ऑल हैव गॉट द आंसर. आई एम नॉट नाउ एबल टू सी इट. तो एल सी मैम इज बाय एलसी ऑसिलेशन से। हाँ, क्यू को अ, हाँ यार, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी. व्हाट शुड आई डू? आई गॉट फ्रोजन. एनीवे, एवरीबॉडी गॉट द आंसर. प्रगति गॉट इट, हर्षिता गॉट इट. मैम एलसी ऑसिलेशन वाली इक्वेशन से। इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन? यहाँ पे दो मैंने लिखा है. मैम एलसी ऑसिलेशन वाली इक्वेशन जो हमने की थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, माइनस डी स्क्वायर बाई डी टी हमने स्क्वायर इसको डबल डिफरेंशिएट कर इक्वल्स दी टू है ना. माइनस एलसी। या यस मैम। एक्चुअली. मैम एसएचएम वाले से भी हो जाएगा, ए इज हाँ, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। थैंक यू थैंक यू. देखो ऐसे ही होता है ना, कभी कभी दिमाग ब्लैकआउट, इसलिए तुम लोगों का कभी कभी क्वेश्चन नहीं होता है. समझ रहे हो? जैसे अभी मेरे साथ हुआ. दिस इज दिस राइट. तो सिंपल है. क्यू इज इक्वल टू एल माइनस एल सी डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर. यस, दिस करेक्ट. Now, you need to do this. Okay, let me draw the diagram for you. The capacitor was uncharged. So there is a capacitor uncharged. Now switch S1 is closed and S2 is kept open. Oh, what was the diagram? Okay, I'm missing the diagram, but you will be able to do it very easily. This is from the RC concept. I will share the diagram while sharing the question. So let's do this question. This is more important. This came in JEE Mains in 2020. But I could only get one question from parallel circuit. I couldn't get it in J advance also, but this concept is actually important. You might get questions. Maybe long back, because I mean some 8, 9 years back, question from parallel circuits used to be there. So we need to solve it. तुम लोग एलसी सर्किट को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में सॉल्व करते हो? एवरीबॉडी? नहीं मैम ऐसे तो नहीं किया कभी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके। इस वोल्टेज को मतलब सेम फेस में कर देंगे, करंट को जैसे करते थे ना, अपोजिट में Okay. कर देंगे, शायद Okay, उससे हो so जाएगा. I will tell you one more familiar thing. कॉम्प्लेक्स नंबर सभी जानते हैं. देखो, जब भी तुम्हारा ऐसा सर्किट हो ना, ऐसा है, एलसीआर सर्किट की मैं बात करती हूँ. तो कैपेसिटर है, कुछ ज्यादा नहीं लर्न करना, क्योंकि तुम सभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से acquainted हो, इसलिए ये काफी अच्छा काम करता है. तो यहाँ पे ये है एक्सेल.
ये है एक्सी, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ये है एक्सी और ये है आर। जेड को क्या लिखते हो आप? जेड को लिखोगे ऐसे आर प्लस आई एक्सी। ठीक है, आई इज द कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टर्म मैं यूज कर रही हूँ, माइनस आई एक्सएल। ठीक है, सो ऐसे हम क्या करते हैं, एक्सी माइनस एक्सएल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फेज एंड ऑल। सो एक्सी के साथ आई कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं और एक्सएल के साथ माइनस आई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस आई XC minus XL. This is how we write Z. So now this is in term of complex number. This is the real part. This is the imaginary part. Mod Z का वैल्यू क्या लिखोगे आप? सिंपल है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, जैसे आप करते हैं ऐसे ही करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व। ये निकल गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में है। इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से। अगर मैं इस सर्किट का निकालना चाहूँ जेड, तो जेड में कैसे निकालूंगी बताओ? दो चीजें पैरेलल में। सबसे पहले इस ब्रांच का आप रेजिस्टेंस लिख लो। जेड वन का वैल्यू आप क्या लिखोगे बताओ? यू विल बी राइटिंग आर 100 प्लस आई एक्सी। ठीक है, एंड जेड वन का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? 100 प्लस आई एक्सी का वैल्यू आप लिख डालो 1/ओमेगा। ओमेगा इज हाउ मच? दैट इज 100। C is how much? That is 100 microfarad. So that is 10 to the power minus 4. So this will be how much? 100. ठीक है, so Z1 is how much? 100 plus 100. This here is I cap. ठीक है, so Z1 is this. Now let's calculate Z2. अगर आप Z2 निकालते हो तो Z2 आप क्या लिखोगे? R minus IXL. यू विल राइट दिस, एक्सेल के साथ मैंने बोला है माइनस आई यूज करोगे। ठीक है, सो आर आप लिखो, आर कितना है? 50 है, माइनस आई, आई का वैल्यू क्या है बताओ? सॉरी वैल्यू पूछ रही हूँ, एक्सेल ओमेगा एल बोलो, ओमेगा क्या हो जाएगा? 100। ओमेगा इज 100 राइट, एल इज हाउ मच? एल इज 0.50, सो 50/100। so this is 50 minus 50i. Now these two are in parallel. अब आप निकाल लो 1/r equivalent. So 1/z1 plus 1/z2. You can easily solve it if you know how to solve complex number. 1/100, 1 plus I plus 1/50, 1 minus I. अब यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना? ये तो बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का है। 1 minus I, 1 minus I. So this will become 1 minus I/2. So here I will write 1 minus I by 200, and this is equal to how much? Uh, yes, this is 1 plus I by 100. ठीक है, now you solve it. इसको 200 बना दो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। If you are going to solve it, you will get how much? 3 plus I. 3 plus I by how much? 200. So this is 1 by R equivalent. R equivalent will be equal to how much? 200 by 3 plus I. Again इसको break कर देते हैं हम ऐसा. So this will become how much? 10, we will get 10 down, right? So this will become 23 minus I. अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, R equivalent कितना हो जाएगा? 20 तो 20 है, 3 माइनस आई कैप का मॉड क्या जाएगा? 9 plus 1 root under. So this is basically 20 root 10, है ना? कहीं गलती नहीं किया ना मैंने? नहीं, दिस इज 20 रूट 10। अब करंट मैम ये निकालना है। Z1 Z2 कैसे लिया? क्या? यस, लाइक Z1 को 100 कैपेसिटेंस प्लस IXL लिया और Z2 इंडक्टर के लिए R माइनस IXL। हम उसमें R लिया, उसमें कैपेसिटेंस लिया। यहाँ पे माइनस नहीं करते एक्सी के साथ क्योंकि दोनों के फेज डिफरेंस में, इफ यू रिमेम्बर एक्सी और एक्सएल कितने का डिफरेंस जाएगा? अगर तुम डायग्राम बनाते हो, ये आर होता है, ये एक्सी लिखते हो, ये एक्सएल लिखते हो। अगर ये पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यस मैम, सो समझ एक्सी गई के मैं। एक्सी के साथ मैं पॉजिटिव में जाऊंगी, एक्सएल के साथ मैं नेगेटिव में जाऊंगी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ओके मैम, यस मैम। ठीक है, सो जेड आर इक्विवेलेंट मिल गया 20 रूट 10। करंट कितना हो जाएगा? 200 बाई 20 रूट 10। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 10 बाई रूट 10, सो रूट 10। दिस इज योर आंसर। रूट 10 मीन्स 3.16 एम्पियर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है,
नॉर्मल मेथड से बता दो, नॉर्मल मेथड से कर लो, अगर नॉर्मल मेथड से तुम्हें करना है जैसे तुम लोग करते हैं। जी माइनस आयोटा की वैल्यू गिवन थी क्या हमको? 3 - आई कैप की वैल्यू कितनी होगी, √10 होगी ना। थ्री, थ्री का स्क्वायर करोगी, आई का स्क्वायर नहीं, आई का स्क्वायर नहीं करते ना, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे ना। यस यानी यस, मैं भी गलत कर रही थी। ठीक है, सो दैट विल बी √10। अच्छा, किसी ने पूछा नॉर्मल मेथड से बता दो मैम। तो नॉर्मल जो तुम लोग करते आए हो ना, अगर मैं उससे जाऊं तो सिंपल है, तुम्हें करना ये पड़ेगा उस केस में, आर इक्विवेलेंट तो तुम नहीं निकाल सकते पूरे सर्किट का, क्योंकि बिना दिस कॉन्सेप्ट के नहीं निकाल पाओगे। यू कैन डू वन मोर थिंग, दैट इज यू कैन कैलकुलेट करंट इन दिस ब्रांच I1, यू कैन कैलकुलेट करंट इन दिस ब्रांच I2, यू कैन ऐड दिस टू करंट। इस ब्रांच में तो करंट निकाल सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा सिंपल आरसी ब्रांच है, एंड दिस इज सिंपल आरएल ब्रांच। तो आरसी ब्रांच के लिए रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, R² + XC का स्क्वायर। देव तुम्हारा 3 आया है, लेकिन चलो 3 भी आया तो यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर, क्योंकि 3 से क्लोज यहाँ पे यही है ना, 3.16। तो यू कैन गो दैट वे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। किसी को और कोई डाउट है, एलसी सर्किट में कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताओ। दिस इज द क्वेश्चन दैट केम लॉन्ग बैक, यू पीपल कैन ट्राई इट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, तो तुम लोग ट्राई कर लोगे। किसी को डाउट है तो बताओ, कोई भी कंसर्न, कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन लेट मी नो। मैम एक 2019 का क्वेश्चन था इसी इसी चैप्टर से, इसमें डाउट था। क्या था बताओ, तुम मैम वो मुझे मैं भेज दूंगी आपको। व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। क्या? जस्ट राइट योर नेम एंड देन सेंड मी, ठीक है। ओके मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। एनीबडी एल्स? थैंक यू मैम। थैंक यू हर्षिता, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, परेशान नहीं होना, अच्छे से काम करो और थोड़ा मस्त रहो। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू थैंक यू मैम। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।